The Enforcement Directorate officials conducted a search operation at Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's Delhi residence. Soren has been accused in a money laundering case related to an alleged land scam. The ED had summoned Soren for questioning. He responded by providing a date for questioning to be the 31st of January. The latest update is that Jharkhand CM Hemant Soren has written a letter to the ED. The letter reads, within quotes, you are well aware that the budget session of the Legislative Assembly will be held between 2nd and 9th February 2024 and the undersigned will be preoccupied with preparations for the same apart from other prior scheduled official engagements. In these circumstances, your insistence to record a further statement of the undersigned on or before 31st January 2024 reeks of malice and reveals your political agenda to disrupt the functioning of the state government and prevent an elected representative of the people from discharging his official duties. The undersigned's apprehensions that your acts are malicious and politically motivated stand vindicated. The issuance of summons to the undersigned is wholly vexatious and in the culpable exercise of powers given by the statute. The ED had given a deadline of 31st January for the Chief Minister to appear voluntarily, failing which they had warned of sending a team for questioning. Earlier, Hemant Soren's whereabouts had created a great concern in the officers of the ED as the agency went to his Delhi residence for a search. Soren was not found to be at home, and the agency, after conducting a search, seized some documents and his BMW car that they claimed were bought using illegal funds. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी के रडार पर हैं। ईडी उनकी तलाश कर रही है। हालांकि हेमंत सोरेन की तरफ से जो ईमेल भेजा गया उसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को वो खुद रांची के ईडी ऑफिस के अंदर अधिकारियों के सामने पेश होंगे। लेकिन इस बीच जो कल हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, उनके तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। वहां पर बताया जा रहा है कि कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा एक BMW कार भी जब्त की गई है। ईडी की टीम लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईडी का अभी तक हेमंत सोरेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उधर हेमंत सोरेन ने झारखंड में जितने भी उनके विधायक हैं, इसके अलावा जो उनके करीबी हैं, उनकी एक आज बैठक बुलाई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि खुद उसकी अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे। लेकिन ईडी का उधर दावा है कि अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के हाथ नहीं लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कार कल बरामद की गई BMW कार शांति निकेतन स्थित हेमंत सोरेन के आवास से, वो कार इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर खड़ी हुई है। ये BMW कार जिसके ऊपर हरियाणा का नंबर डला हुआ है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस कार का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा जाँच के दौरान ये भी पता चला है कि दरअसल ये वो कार है जो कि अवैध तरीके से जो रकम कमाई गई इस जमीन घोटाले के दौरान उससे खरीदी गई है। तो ऐसी एक और गाड़ी जब्त होने की बात फिलहाल की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल एक BMW कार और कैश बरामद हेमंत सोरेन के ठिकाने से ईडी के द्वारा किया गया और ईडी लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क करने की भी कोशिश कर रही है। तकरीबन कल 11 घंटे की तफ्तीश ईडी की तरफ से की गई। देर रात भी ईडी ने इसी गाड़ी के अंदर सर्च भी किया जब उनके आवास के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और इस गाड़ी से भी कुछ बताया जाता है दस्तावेज बरामद हुए थे और उसके बाद इस गाड़ी को फिलहाल ईडी ने जब्त कर लिया है। The Chief Minister has so far evaded 7 summons for questioning, and sources said that he is prepping to challenge the ED summons in court. The investigating team went to Jharkhand Bhavan and his father's residence at Motilal Nehru Marg, but Soren could not be found there either. His chartered plane remained parked at the Delhi airport. भ्रष्टाचार ही हमारा शिष्टाचार। अगर कोई पकड़े तो हम चिल्लाए अत्याचार अत्याचार, खेले विक्टिमहुड कार्ड। यही नारा है इंडी गठबंधन का। बताइए, भ्रष्टाचार ही इनका शिष्टाचार है। एक मुख्यमंत्री झारखंड के वो मिल नहीं रहे, 9-9, 10-10 बार समन जाते हैं, समन का जवाब नहीं देते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको भी कई समन जाते हैं तो वो समन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, एजेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं। तीसरी TMC शाहजहां जैसे उनके नेता है कि ईडी जाती है जांच करने, एजेंसी जाती है जांच करने तो एजेंसी पर हमला करवा देते हैं। इस प्रकार के नेता है। लालू और पौनमुड़ी कन्विक्टेड है, राहुल और सोनिया बेल पर है
और धीरज साहू के घर से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, कई दिनों तक गिनती उसकी चलती रहती है। इसीलिए इनका कोई मिशन विशन नहीं है। इस कोलिशन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन। विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जीना मुश्किल कर दिया है। अभी हेमंत सोरेन का उनके पीछे लगे हुए और उधर लालू यादव ये और तेजस्वी यादव पीछे लगे हुए हैं, उनको नहीं जीने दे रहे हैं। और बंगाल में भी कुल मिला के स्थिति यही है और दिल्ली में भी है। तो जितनी सर्कमस्टांसेस हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि यह आखिरी चुनाव होगा और वास्तव में आखिरी चुनाव हो गया, आगे चुनाव होगा नहीं। और वैसे तो चुनाव चीन में भी होता है और रूस में भी होता है, पार्टियां वहां भी हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। तो नाम मात्र का जनतंत्र भारत में भी रह जाएगा अगर दोबारा मोदी जी चुन करके आते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में सबको खत्म कर दिया। पार्टी में जिनको टिकट के लाले पड़े थे कि एमएलए का टिकट मिलेगा कि नहीं, उनको मुख्यमंत्री बना देना, और जिन्होंने पार्टी को बनाया उन सबको ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, एकदम नौकर और चपरासी की तरह बना दिया, पता ही नहीं लग रहा। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना। आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को। And to speak more on the matter, I am now being joined by my colleague Brijesh Pandey, who's live from the newsroom. Brijesh, the one thing which actually is a technical thing, we'll come to the political slugfest in a bit. You know, they say that this is the time when we will come. A letter is sent that I shall be available on 31st of January, that being Wednesday around 1 p.m. And they swoop down and say that we just have more documents and we have to investigate him. How do you see this, Brijesh Pandey? Well, you know, that is a bone of contention between the political parties, because, you know, the JMM, as you just heard, Manoj Pandey is one of the JMM spokesperson, has pointed out, and so is being pointed out by opposition parties, is that once it has been clarified between the two parties, which is Hemant Soren, the Chief Minister of Jharkhand, and Enforcement Directorate, that he will appear before 31st or on 31st at their local office and answer all their queries. This immediate concern for questioning him on the new evidences that has cropped up, and the way the entire situation went off, as if, you know, that they are on a hot chase to nab a criminal, you know, reeks of the vendetta politics which is being practiced by the BJP for making sure that ED questions only those who belongs to the opposition party. And that is the reason why, you know, yesterday, when after a lot of commotion went down, that Hemant Soren, I beg your pardon, has gone missing. This is also very amusing that, you know, that a chief minister who is one of the the biggest protectee of the state, and also he's traveling to Delhi, and he is all of a sudden gone incommunicado, is another aspect of this entire narration which has been going on, investigation which has been going on since yesterday morning. See, opposition is saying that the ED is only being used to target the opposition leaders, and that is the reason why immediately after the swearing in ceremony of Nitish Kumar, along with BJP as its allied partner, there was summons issued to Lalu Prasad Yadav, who was questioned for more than 10 hours yesterday, and today Tejasvi Yadav has been asked to appear before the court. Yesterday we saw,
Bhupender Singh Hooda also being questioned, and there was the Enforcement Directorate wanted to question Hemant Soren as well. So, this is a game which is going, this is something which is going on between the Chief Minister of Jharkhand and the Enforcement Directorate. I think, the opposition parties have also decided, going by, if you look at the way Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, has been completely avoiding the summons issued by the Enforcement Directorate. They are saying that, that if you want to arrest us, since you have already made up your mind, come arrest us, but we are not going to join in the charade by joining the investigation and then, being painted as a criminal, because it's just political vendetta and nothing else. So it'll be extremely interesting to see, Sudha, how this pans out, because, if the opposition leaders are arrested, if the opposition chief ministers are arrested, it gives them a chance to cry martyr at the altar of the Enforcement Directorate just before the 2024 general election. So it's a double-edged sword, as far as these questioning and other investigations concerned. So, Brijesh, very interesting point, because I was going to ask you about Arvind Kejriwal's defiance. Now it seems like defiance, whether the BJP says that, look, Soren has actually absconded, bhagoda, the word in Hindi that they have used. But the point is, there is defiance. So does that mean that, are they also not kind of hyping up the entire ED investigating agency being completely cruel to them element, rather than when it comes to them they say law shall take its own course, law, we believe in the judiciary of this country. So don't you think there is a bit of a hypocrisy there, Brijesh? Well, Sudha, the thing is that it all depends on which side of the fence you are. If the same ruling party, if it is in opposition, they say that, a vendetta politics is being practiced by anybody who is in the power, and this has been, since time immemorial. What is interesting is that, the use of the word absconding, I think, if any XYZ person or political personality is absconding, can only be declared by the investigative agencies and not by a political party. The BJP will definitely want to drive maximum mileage, saying that, Hemant Soren has indulged into a lot of corrupt practices. He has demeaned the name and the stature of the Jharkhand as a state, and he's absconding, he's avoiding all kind of summons which are being issued by the Enforcement Directorate. See, the opposition has come up with a plan saying that, right now, whether they join the investigation or whether they don't join the investigation, if you go by the larger look of it, chances of them being arrested looks pretty imminent. So they're saying that, why not capitalize, why not make the most of the situation by saying that, I know what you want to do, and if you want to do, let's be a martyr rather than to join the investigation and then being arrested by the Enforcement Directorate.